हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्टॉक मार्केट। सो गाइस, आज हम बात करेंगे स्टॉक टिप्स के बारे में। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका प्यार और सहयोग आवश्यक है, तो सहयोग दीजिएगा। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस, आज हम बात करते हैं स्टॉक टिप्स के बारे में। फर्स्ट स्टॉक है हमारा ट्राइडेंट लिमिटेड। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। ओके, लेट्स मूव। ओके, सो गाइस, ट्राइडेंट शेयर प्राइस, स्टॉक एनालिसिस एंड रिकॉर्ड्स। करंट मार्केट प्राइस 29.60 विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹45। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। सेक्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स एंड फर्निशिंग। ओके, this is the technical chart. Trident Limited. Insights, key metrics, returns. Okay, insights, intraday fact check. In the last 18 years, only 5.2%. Trading season saw intraday gains higher than 5%. Key metrics, PE ratio 30.64, EPS TTM 0.95, 0.97, market capital 15,084.03 crore, sectoral market capital rank 2, PB ratio 3.82, dividend yield 1.22, face value 1, beta 0.10, VWAP 29.40, 52-week low high 57.40 and 25.05. Trident Limited share price returns 1 day, 1 week, 1 month, 3 month, 1 year, 3 years and 5 years. Okay, news. Okay, key metrics, insights and returns. Trident news and analysis, Trident share analyze, recommendation, strong buy. Okay, financials. Employee and interest expenses. Company has spent 1.23% of its operating revenues towards interest expenses and 9.57% towards employee cost in the year ending 31st March 2022. Source consolidated financials. Okay, balance sheets. Okay, balance sheets. Okay, ratios. Cash flow. Okay, income, profit and loss. Quarterly, annual, December 2022. Total income growth 1648.70, total income growth plus 14.26, total expenses 1445.36, total expenses growth plus 5.21, EBITDA 203.34, EBITDA growth plus 194.06, profit after tax PAT 144.26, PAT growth plus 285.83. EBITDA margin 12.33, net profit margin 8.75, basic EPS 0.29. Forecast, technicals.
38% positive movement since 1st Jan 2005 on intraday basis. 56% negative movement since 1st Jan 2005 on intraday basis. Pivot levels, ATR, price analysis, classic R1, R2, R3, S1, S2, S3, pivot 28.73, ATR 5 days, 14 days and 28 days. Peer comparison. This is the technical chart. Peer comparison. Stock returns versus Nifty Midcap 100. Stock gave a 3-year return of 593.98% as compared to Nifty Midcap 100, which gave a return of 166.57% as of last trading season. Okay. Trident Limited, Wellspun India and Indocount Limited. Ratios performs. Shareholding pattern. Category 31st December 2022. Promoters 72.94, pledge 0.00, FII 2.36, DII 0.04, mutual funds 0.04, others 24.66. Total shareholdings. Okay. Mutual fund ownership. First, Nippon India ETF Nifty Midcap 150 growth and equity midcap. Amount invested 1.49 crore, 0.22% annual plus 16.04 change month to month basis. Okay, then second, Motilal Oswal Nifty Midcap 150 indirect equity midcap, rating 3 star, amount invested 1.44 crore, 0.22% annual plus 2.48% change month to month basis. Okay, then third, Nippon India Nifty Midcap 150 indirect equity midcap, amount invested 1.24 crore, 0.22% annual plus 2.64% change month to month basis. Okay, corporate action. Okay, Trident dividends. Others. About Trident India Limited. Okay. Trident Limited key product. Incorporated in the year 1990, is a mid-cap company having a market capital of rupees 14,345.12 crore, operating in textile sector. एक textile company है ये. Trident Limited key product revenue segment include textiles, paper, export incentives, waste sales, chemicals, other services, other operating revenue and sale of services for the year ending 31st March 2022. Okay, financials. For the quarter ended 31st December 2022, the company has reported a consolidated total income of rupees 1,648.70 crore, up 14.26% from last quarter. Total income of rupees 1,442.94 crore and down 16.89% from last year same quarter. Total income of rupees 1,983.65 crore. Company has reported net profit after tax of rupees 143.23 crore in latest quarter. Okay. Okay, company has S.R. Bartley Boy and Company LLP as its auditors as on 31st December 2022. The company has a total of 509.60 crore shares outstanding. Rajendra Gupta, non-executive chairman.
इंडस्ट्री टेक्सटाइल फर्निशिंग डेयरी टॉवेल्स। दीपक नंदा मैनेजिंग डायरेक्टर, लोकेशन ट्राइडेंट ग्रुप, संघेरा पंजाब 148101 इंडिया। ओके सो गाइज, ट्राइडेंट शेयर प्राइस, स्टॉक एनालिसिस एंड रिकॉर्ड्स, सेक्टर टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स एंड फर्निशिंग डेयरी टॉवेल्स। करंट मार्केट प्राइस 29.60 विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹45। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। ओके सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। बोलो राधे राधे।